Hello friends, welcome to Birens Academy. I am Pramila. Today we will going to discuss about a very important concept from your unit 3, that is the theory of impersonality by T.S.Eliot. The full name of T.S.Eliot was the Thomas Turn Eliot was born in St. Louis, Missouri in mid-western America on 26 September 1888. He was a famous poet, playwright and a critic. T.S. Eliot को पूरा ना थिला थॉमस टर्न इलियट आउ तांको जन्म होइतिला सेंट लुइस रे मिसर इन मिड वेस्टर्न अमेरिका केबे 26 सेप्टेम्बर 1888 रे ओके सी गोटे फेमस प्लेराइट थिले पोएट थिले आउ क्रिटिक थिले अंडरस्टूड नेक्स्ट मूव ऑन ही वाज आल्सो ए नोटेबल मॉडर्न क्रिटिक known for his essays and he has written very important essays. First one is the tradition and the individual talent and Hamlet and his problem. In tradition and individual talent, you will find the theory of impersonality. Understood? एटी कौन ट्रेडिशन आउ इंडिविजुअल टैलेंट आउ तांकर हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम तांकर दुईटा नोटेबल एसेस थिला जो थे कि आम ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट रे थियोरी ऑफ इम्पर्सनालिटी आम पाइबा. नेक्स्ट मूव ऑन टू द ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट. It is an essay first published in the Egoistic in 1990 and later Eliot's first book of criticism, The Sacred Wood, which published on 1920. इटा कौन है फर्स्ट पब्लिश होता कलेक्शन ऑफ एसेस जोटा कि द सैक्रेड वुड सॉरी एक्सक्यूज मी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एसेस जोटा होची द सैक्रेड वुड. नेक्स्ट सी फर्स्ट तांकर पब्लिश्ड होता इगोइस्टिक कलम रे जोटा कि 1919 रे लेटर पब्लिश्ड है तांकर एसे बुक रे जोटा होची द सैक्रेड वुड जो थे कि 1920 रे सेटा पब्लिश्ड होता. So it is divided into three parts. You have to remember all these points that it is divided into three parts. That is, first one is the concept, second the theory of impersonality, last one is the conclusion. See, like Wordsworth, how he has defined poetry, as I have already discussed in the last videos, that is Wordsworth's definition of poetry. That is, poetry is the recollection of emotions. Understood? Where we will find the recollections of the emotion. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings which recollected in tranquility. Understood? That is the definition of Wordsworth poetry. And in that poetry, according to Wordsworth, he defines that poetry is the recollections of emotions of a particular writer or the particular poet. Understood? But here Eliot defines that poetry is a turning loose of emotion. Understood? But an escape from emotion, not the expression of personality but an escape from personality. Understood? He has defined it in a different way, that he is opposing Wordsworth theory of poetry, that the definition of poetry, where Wordsworth says that the emotions, poet's emotion is very much important. Yet Eliot says that not the personality or the emotion of the particular poet is important, but the situations or the creations is very much important. So he should escape from his personal. Understood? So he should escape from the personal. केमिति देखो my I myself, okay, my I myself ए कौन ए सब जाक हूँ आम निजे सी कहते जो राइटिंग्स रे मु माई सेल्फ यही सब जिन नथिबो माने से निजको डेस्क्राइब करू नथिबो निजर इमोशंस फीलिंग्स को राइटिंग्स रे डेस्क्राइब करू नथिबो. बहुत लोक अछंती कहिबे कोन फॉर एग्जांपल्स जदि आमे नबा कहिबे मु एटा करिछि मो द्वारा एटा हेछि माने मु सेल्फ निजको से माने बहुत प्राउड फील करनते निजे सेल्फ निजको जहाँ सिचुएशंस हो से माने निज आड़ू आने को ट्राए करती. बुझीपार सेटा एटी इलियट सेटा को टोटाली कौन कर मना कर कहते पर्सनालीटी पोएट्र
प्रॉपर निजो पर्सनालिटीटा राइटिंग्स रे रिफ्लेक्ट हबो नाही अंडरस्टूड बट से सिचुएशंस रे सी जहाँ फील करुची सेटा सी सेठी दे परियो बट तार ओन पर्सनालिटी को सी रिवील करि परिबो नाही अंडरस्टूड सो इन हिज एसे अर्लियर प्रेजेंट हिज theory of impersonality. Okay, in this essay he has described about the theory of impersonality, how the personality is not that much of important in writing. Understood? So next we will move on to the main topic, that is the theory of impersonality. To create a good poetry one should surrender the self. If a particular poet wants to create a good poem, so he should सरेंडर हिमसेल्फ अंडरस्टूड जे से निजे जदि गोटे भल पोएट्रीटा क्रिएट करने को चाहिए से निज को सरेंडर करिया पड़ो निजर फिलिंग्स निजे इमोशन सी कौन भाव सेटा नुह ओवरऑल सोसाइटी ओके ओवरऑल कंडीशंस को नहीं कि से लिखिबो दिस सेल्फ सैक्रिफाइस ऑफ पर्सनालिटी गिव्स बर्थ टू ए गुड पोएम व्हेन ए पर्टिकुलर पोएट सैक्रिफाइस हिमसेल्फ एंड हिज पर्सनालिटी when he is totally denied to write about himself what his thought and feeling says at that time you will find a good poem understood जते बेले गोटे पोएट निज को सैक्रिफाइस करिवो बा निज विषय किछि भी एलाबोरेशंस करिवोनी निज विषय माने कोन निजर इमोशंस निजर फीलिंग्स से टाइम सी कोन भाबुजी सेटा को जदि सी सेठी एक्सप्रेस करिवोनी सेतबेले आमे गोटे भलो पोएम को पाई परिबा According to T.S.Eliot, one should negate his mind. In doing so, one loses in individuality and his personality. So, one should negate his mind in doing so. Okay. So, one loses the individuality and his personality. ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ ନିଜକୁ ସେଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବନି ନିଜେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ତା ନିଜର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ତା ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲିଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ପୋଏଟ୍ରିଟା ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବ all the personal emotions feelings and experience should be sacrificed understood so here his own emotions own feelings own experience should be sacrificed while writing poem so there should not be the personal image of image of poet in his poetry understood when we will reading any kind of poem okay we will not find any kind of trace of a writer understood आमे किछि भी भलो पोएम्स पढ़िबा पोएट्रीटा को किछि गोटे पोएट्री कलेक्शंस को पढ़िबा सेठी आमे पर्सनली राइटर्स केमिति सेटा सेठी रिफ्लेक्शंस हे न थाए अंडरस्टूड जदि आमे पढ़िला बेले जानि परिबा जे से राइटर ऑफ फीलिंग्स राइटर्स एमिति तो सेटा हमर कोन हबो T.S.Eliot करो ऑपोजिट रे रहिबो अंडरस्टूड सो हियर देयर शुड नॉट बी द पर्सनल इमेज ऑफ पोएट इन हिज पोएट्री पोएट्री शुड बी impersonal but it does not mean that the poet should not write his personal feelings but that personal feelings should be converted into art feeling understood here T.S.Eliot says that poetry should be impersonal okay poetry totally should be impersonal there should not be any kind of personal feelings or emotion but he says that no doubt a poet should not write about his personal feelings but the personal feelings should be converted into art and arts feelings बुझी पारलो जे कौन करिवे पोएट्री टा गोटे impersonal वे रे लिखा हबो जो थे कि पोएट्र निजर पर्सनल फीलिंग्स इमोशंस को न लिखा कहते ताने से नुह कि तार इमोशंस फीलिंग्स को सी एक्सप्रेस करनी ता इमोशन फीलिंग्स को सी आर्ट फॉर्म रे कन्वर्ट कर आर्ट फीलिंग रे कन्वर्ट करिकी सेठी तार निजर पर्सनालिटी को प्रेजेंट कर अंडरस्टूड माने निजर पर्सनल व्यूज को प्रेजेंट कर परिवो ना कि से निजे जहाँ भावुची जहाँ फील कर विषय से लिखिपर अंडरस्टूड Therefore, we as a critic should not look for personality of poet in his poem because the text is objective. Understood? So, when we are the critic, okay, we are the reader. When we are reading any kind of poem, we should not look about the personality of the poet.
अंडरस्टूड से आम से राइटर्स लिखी तार पर्सनालीटी कौन ता पर्सनाल फीलिंग्स कौन सेटा आम से देखियानी बट आम कौन देखा टेक्स्ट ऑब्जेक्ट कौन अंडरस्टूड टेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन सेटा आम देखा द थियोरी दैट द पोएट शुड the theory that the poet should surrender his personality is depersonalized. So here in this theory we will find that the personal feelings or the personality of an individual or the personality of a poet is surrendered and that is totally depersonalized. The poet's personal feelings and emotions should be the personalized. He must be an impersonal and objective like a scientist. So here he was defining that he should be impersonal like a scientist. आमे किछि गुटे साइंटिफिक क्रिएशंस को देखिबा बा साइंटिफिक मिक्सचर को देखिबा सेतरे कोन होची जे साइंटिफिक फ्यूजन से तळे होची सेतरे आमे किछि भी ट्रेस ऑफ तर फ्यूजन से को केमिकल्स एडेड हेची आमे जानि परनु अंडरस्टूड सेमिति जेतेबेले गुटे पोएट निजे गुटे पोएट्री क्रिएशंस करिवो सेठी तार पर्सनल फीलिंग्स तार पर्सनल इमोशंस आमे किछि जानि परिबा नाही अंडरस्टूड आमे टोटली सोसाइटी व्यू पॉइंट रे देखुजे टोटली हमरो नॉर्मल इमेजिनेशंस रु देखुजे ना कि एज अ राइटर ता व्यू पॉइंट केमती तार पर्सनल इमेज केमती सेटा सेठी से डिस्क्राइब करि नथिबो अंडरस्टूड एडा हला हमरो थ्योरी ऑफ इम्पर्सनालिटी देखो इन दिस ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट व्हाट ही वांट्स टू सजेस्ट इज दैट there is a fusion of tradition and individual talent here understood सेठी कौन होची हमरो फ्यूजन्स होची ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट ट्रेडिशंस माने कौन पूर्व पुरुषंकर जहा आसीची सेटा नु बा पूर्व पुरुष हमरो आगरु जो माने लिखिचंदी सेटा को जेतेबेले गोटे पोएट कन्स्टेंटली पढिबो जेतेबेले कन्स्टेंटली तक रिसर्च करिवो देखिबो सेथुरु भी किछि किछि जिंस सिखिबो जोथरे कि तार निजर इंडिविजुअल टैलेंट को ऐड करिकी से गोटे नुआ क्रिएशंसटा करि परिबो अंडरस्टूड सेटा होची हमरो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जोथरे कि से थ्योरी ऑफ इम्पर्सनालिटी देथिले से इम्पर्सनालिटी रे कोन होची ना कि राइटर निजर ओन फीलिंग्स ओन इमोशंस माने निजे ओन सेल्फ को सेठी डिस्क्राइब करिवो सेठी सेही गुडा को से डिस्क्राइब करिवो नाही सेठी कोन करिवो जे एज ए होल ओके कंबाइंड समस्तंकर व्यू पॉइंट रे केमिति समस्तंको फीलिंग्स केमिति इमोशंस केमिति सिचुएशंस को देखिकी से ता ऊपर एठी डिस्क्राइब करिवो सेटा होची थ्योरी ऑफ इम्पर्सनालिटी ऑफ पोएट्री ओके आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट एंड हियर as I have before in unit 2 I have already discussed about the objective correlative and disassociation of sensibility. This concept I have already discussed. So again I am telling it that the T.S.Eliot has coined the term objective correlative. Okay, objective correlative, and that is the disassociation of sensibility. Okay, so here T.S.Eliot has coined these two terms, that is the objective correlative and disassociation of sensibility. And here the objective correlative he defined it or he coined it from his essay in his essay that is Hamlet and his problem. Hamlet and his problem. Okay, Hamlet and his problem. These are the important points which I have already highlighted here. You have to remember all these points. In your exam point of view, it is very much important. I hope you understood the concept of theory of impersonality. Thank you for the class.